آج کی اس پاک محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہمیشہ سے ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ رحمت عالم حضرت مجسم جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں 2-3 اشعار نعت پاک میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلا پروگرام جو ہے وہ عرض کریں گے۔ جو ساتھی کھڑے ہیں گزارش ہے، آگے جگہ ہے قدیم پر، آپ آگے تشریف لے آئیں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ
आका का दर देख के आए हैं ना। जिन लोगों ने भी मदीना पाक हाजिरी देनी है उनकी तो अलग बात है। आप तो शहंशाह का दर देख आए हैं, आप तो कमली वाले आका का घर देख आए हैं, आप तो मदीना तैयबा की वो धरती देख आए हैं जहाँ 70,000 मलाइका सुबह उतरते हैं, 70,000 शाम को उतरते हैं। आप तो वो दर देख आए हैं ना। और उस दर की हाजिरी जिस वक्त बुजुर्गों की हुई तो उन्होंने पता क्या कहा था, मैं काबिल नार के मुझे जन्नत हुई नसीब, इस दर की हाजिरी से मेरी किस्मत बदल गई। सुभान अल्लाह। आप सब तो उस दर की हाजिरी करके आए हैं, लिहाजा मिल जाए। अब मेरी जचता नहीं कोई, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सर, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई जैसे और है, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे ये दूर से कहती है अभी तक शबे मेरा, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा। यानी ये दूर से कहती है अभी तक शबे मेराज। शबे दूर वो थी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब ये मिलता है लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, अगर मुझे देखना चाहता है तो फिर देख। पहले बात ये होगी कोहे तूर पर मैं अपने नूर का नहीं, ये सुई का नाका होता है ना जिसमें धागा डालते हैं, उसका करोड़वां हिस्सा कोहे तूर पर डालूंगा। अगर तूने देख लिया तो फिर अगली बात बाद में करना। अल्लाह करीम ने कोहे तूर पर वो थोड़ी सी नूर की तजल्ली डाली, कोहे तूर जल के रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। ये तूर से कहती है अभी तक शबे मेराज। वो मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, शबे मेराज मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आसमानों के ऊपर अर्शे आदम पर तशरीफ ले गए और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाब क़ौसैन औ अदना, सरकार फरमाते हैं मैंने अपने सर की आंखों से रब्बे कायनात का रिज़ा किया। ये दूर से कहती है अभी तक शबे मेराज, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। ख़वातीनो हज़रात, चूंकि ये तरबियती नशिस्त है तो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ, कल हमने प्रोग्राम बनाया था कि रात को आज आपको रास्ता दिखाने के लिए ले जाएंगे, है ना प्रोग्राम? काजी साहब ने मुझे तो कहना कि साडी शैताना नाल मुलाकात किस वे करानी चाहिए, मैं क्या फिक्र न करो आज ही करा देंगे। तो आज रात को 10:30 बजे का प्रोग्राम है। अभी रफीक साहब कह रहे थे कि शायद अभी नमाज के बाद थोड़ा सा अर्ली है तो कर लें, लेकिन
اب میں دیکھ رہا ہوں جتنے لوگ کل تھے وہ سارے نہیں آئے ہوئے ہیں. اگر ارلی کریں گے تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی بندہ رہ جائے تو پھر یہ مناسب نہیں. اور ویسے بھی کھانا شانا کھا کے اتنی دیر میں بندے فارغ ہو جائیں گے اور 10:30 بجے ہی 10:30 سے لیٹ نہیں ہوں گے. جو ہمارے بہن بھائی جانا چاہتے ہیں وہ کھانا اس سے پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 10:30 بجے ہم یہ شیطانوں کا رستہ دیکھنا واسطے جائیں گے. شیطانوں کا رستہ دیکھنے کے لیے جائیں گے. اللہ پاک نیک لوگوں نے رستہ عطا فرمائے. لیکن ہم یہاں یہی دیکھنے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو ماریں گے. ان کو دوست نہیں بنائیں گے, ان کو ماریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سب سے پہلا اعلان یہ یاد رکھیں کہ کتنے بجے 10:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور باقی آج ہمارا پروگرام یہ ہے کہ انگلش والے کافی ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو انگلش میں زیادہ گفتگو کی جائے تاکہ کل انگلش میں گفتگو نہیں ہو سکی اور ہمارے یہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں یہ بھی سمجھیں. اور دوسرا آپ یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل ہماری کوچز جس وقت آ جائیں گی ہم نے موو کرنا ہے اور آپ نے مغرب کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ احرام آپ باندھ لیں. مغرب کے بعد ہی میرا خیال ٹھیک رہے گا کیونکہ کل رش بہت ہے. ٹائم وہ پہلے کا انہوں نے گاڑیوں کا ٹائم ہمیں مغرب سے پہلے کا دیا ہے. گاڑیوں کا ٹائم مغرب سے پہلے کا دیا ہے لیکن ہر سال ایسا ہوتا ہے اور گاڑیاں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن آسانی اسی میں ہوگی کہ اگر آپ پہلے باندھ لیتے ہیں نا بعد میں باندھ رہے ہیں پہلے بھی باندھ رہے ہیں. آپ احرام اگر مغرب سے پہلے باندھ لیں گے تو پھر آسانی ہے. جس وقت چونکہ گاڑیاں شاید 2 ہوں اور ان کو کئی چکر لگانا پڑے ٹھیک ہے. تو چونکہ کل بھی بتایا تھا کہ جو ہم نے ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے اس وقت تو گاڑیاں پوری لے آتے ہیں لیکن یہ کل کا دن جو ہے ہر بندے کو نے موو کرنا ہے اور جس وقت تم نے ہر بندے کو موو کرنا ہے اس وقت ان کی کوشش کی گاڑیاں بہت زیادہ روڈ پہ ہوتی ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گاڑیوں کے چکر زیادہ لگ جائیں اور روڈ پہ کم سے کم ٹریفک چلتی رہے. آپ اس کا اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ ہمارا 500 کا گروپ ہے, ہماری 10 کوچز بنتی ہیں. اگر 10 کوچیں ایک ٹائم صرف ہمارے گروپ کی روڈ پہ آئیں گی تو وہ کیا پوزیشن ہوگی. اور اگر ہمارے گروپ کی مثال کے طور پہ 2 یا 3 کا کوچیں روڈ پہ آتی ہیں تو پھر جگہ مل جاتی ہے. انہوں نے چونکہ سارے گروپ کو موو کرنا ہے لہذا آپ صاحب اسپیکر کو کھلوتے رہے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. چلو تو عرض یہ ہے کہ کل آپ مغرب سے پہلے احرام باندھ لیں تو یہ گڈ ہے ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ ہے. تو ابھی انگلش واسطے میتھ بیٹا آتے ہیں اور انگلش میں بچوں کو انتظامی امور کے متعلق بتاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can you all hear me at the back? So first of all, we'd like to congratulate you all on making it this far in the Hajj journey. Inshallah, it only gets more difficult. Allah Ta'ala make it easy for us to all coming days, and inshallah, we will get through the Hajj together, and inshallah, we will reap the rewards from Allah Subhanahu wa Ta'ala. First of all, I will be talking more so about health and safety and how to keep safe during the Hajj, and just a general overview of the tariqah of performing the Hajj. My younger brother Talha Bukhari will come down shortly and he will go through
the more Islamic, the more religious, the farais and the wajibat of the Hajj. I want to speak to the people, particularly who are elderly and who are suffering from illnesses. First of all, the most important thing you need to bear in mind is that you need to keep hydrated. Har waqt aapko, you need to keep a bottle of water on you, please. Har waqt. From the pharmacies, you get little hydration tablets, you get glucose tablets. It is very good if you've got them with you as well. There's a lot of walking to do, so it's very easy to lose track of how much water you're intaking. So if you've constantly got a water bottle on you, and there's water coolers spread throughout our walking paths. So if you keep in your water bottles topped up and keep sipping on them, with dehydration, it's one of them things that creeps upon you. You don't realize it before you know it's too late, your tongue's white and you're dehydrated. I've seen it happen year in, year out where people get dehydrated purely through drinking not enough water. So keep on top of the water, keep on top of your salt levels. There's also salt tablets that you get. Once you sweat profusely, you lose salt through your sweat. So keep on top of the salt levels, and inshallah we shall get through it safely. Tomorrow, as Shah Sahib said, the buses will be arriving around Maghrib time, inshallah. The first two coaches will be arriving around Maghrib time. This being said, you need to be prepared for 7 o'clock. We will start at the top, the 5th floor and the 4th floor. We will take them on the first coaches, and until we call you down, please do not come downstairs. You've seen the lobby is very small. If we have all 400 people downstairs, it will get very crowded and people will get frustrated. Please, I keep repeating this every time I have to speak to you publicly, whether I'm giving you the rooms or whether I'm allocating you the keys. Please do not crowd in one place. It gets very, very difficult and people lose their tempers. And as much as we tell you, people do not listen to us. So please stay in your rooms until we call you downstairs. This way it will be easier for you and it will be easier for us. Expect to be waiting to get onto the coaches. You will realize tomorrow it is very, very busy on the roads. Unbelievably busy. The road to Mina by a coach takes 5 to 10 minutes if there is no traffic. You'll realize tomorrow it can take hours just to get there on the same path. By you continually asking us, when's the coach coming, it's not going to come any quicker. It's going to take as long as it takes. So please bear with us, as when the coaches come, we will call you down floor by floor. This way there'll be organization and inshallah there'll be a lack of frustration between everyone. Once we get to Mina Sharif, we will have 8 camps. These camps we will split out between men and women. We will have one side for the men and one side for the women. Now, there's roughly 50% split between men and women, so please remember when you get there, one sofa bed per person. One sofa bed per person, regardless of how much you weigh or how little you weigh, is one sofa bed per person. If you imagine this table, just an elongated version of this, about a table and a half is how much room each person gets. So a lot of people ask me, what is useful to take with me to Mina and what is useful to take with me to Arafat? I always tell people, the less is the best. The less you take, the better it is for you, because you're going to have to carry these things around with you wherever you go. So your bare essentials, for the guys, I'd always say take a spare ihram and a spare pair of flip-flops. If you're taking them, why flip-flops? The ones, chappals basically in Urdu. If you're taking them, it's always better to take a spare one, purely because I've seen year in, year out, people's flip-flops get ripped. So if you've got a spare one, it's always beneficial. And a spare ihram, if anyone is on medication, take your medication with you. And the essentials, like I said, your glucose tablets and a bottle of water. Whilst you're walking around, if you don't have any of them spray bottles to keep yourself cool, what I recommend is these normal water bottles. You just hold that up. Just hold that up. These, if you pop a hole using a knife into the top of it, it becomes a spray. So once everyone's overheating slightly, just spray yourself with that, move on, fill the water bottle up, and then you're okay. Now, once we get to Mina Sharif, we'll be spending the night of 7th Zul Hajjah, which is tomorrow night in Mina. We will be spending the full day, 8th Zul Hajjah in Mina, and the night of 8th Zul Hajjah in Mina.
inshallah Azza wa Jal, before Zohar Salah, we will move to Arafat. Again, the same procedure. We will be going on coaches from Mina to Arafat, and you've got to be patient. There is hundreds and thousands, if not millions of people moving to Arafat at the same time. We will move to Arafat coach by coach, and then once we get to Arafat, inshallah, we will spend Zohar to Maghrib in Arafat. Once we have spent Zohar to Maghrib in Arafat, again the same procedure for Muzdalifah. In Muzdalifah, when we move from Arafat to Muzdalifah, all the group leaders are told on a lottery basis when they will move. So we could be the first people to move from Arafat to Muzdalifah, or we could be the last people to move from Arafat to Muzdalifah. Again, it is done basically on luck, which company goes first, which company goes last. A lot of people get frustrated when they're in Arafat waiting to move to Muzdalifah. Lekin jab Muzdalifah pahunchte hain, everyone's like, we should have stayed in Arafat a little longer. Muzdalifah is one of the most difficult aspects of our trip, purely because we're under the stars. It's a rough environment, it's a rough terrain, it's a mountainous, rocky environment. And we've got to spend basically from Maghrib up until Fajr in Muzdalifah. Now, we may get there after Isha, we may get there at 2 a.m., we may get there at 3 a.m. Well, in my opinion, the later we get there is always better. But if we get there early, Bismillah, it means we can come together. Once we're in Muzdalifah, you'll realize that everyone gets separated. It's just wherever you find space, you lay your head. People ask me what is beneficial to take with you to Muzdalifah. In Muzdalifah, again, very, very little. If you've got them thin kapde types or a musalla or something, just something to sit on or lay your head on. A chattai type of thing, a little cloth or something that you can lay your head on. Other than that, in Arafat, you will be given a night pack of food. A lot of people decide they're hungry and eat that in Arafat. But if you store that for you for the night, then you can eat that during Muzdalifah. That is given to you specifically for Muzdalifah. And then after Fajr Namaz, this is where it's very, very difficult. Now, all the able-bodied and young people, I recommend you walk. From Muzdalifah onwards, you walk. Muzdalifah to Mina, and Mina to Jamarat is not a long walk. It's maybe 2.5, 3 miles. If you do this walking, you will be a lot more comfortable, and you will be giving up your spaces to the disabled and the elderly on the coaches. These coaches in Muzdalifah are not our coaches. These are the Ministry of Hajj coaches, and they're not dedicated just to our group. They're dedicated to the whole of Camp 50. There's about 1,500 people, 1,500 to 2,000 people there, and there's maybe 6 or 7 coaches. So these coaches will be going from Muzdalifah to Mina, back to Muzdalifah, back to Mina, back to Muzdalifah. So you'll realize if a coach is a 50-seater, there'll be 150 people on that coach. Everyone will want to get onto that coach. So to my younger brothers and sisters, I not only request, I recommend that you walk. On them transports, you'll be waiting a long period of time, and it's very, very cramped, and I strictly say to the elderly and disabled, go on them coaches. By that point, even Jawan Bande thak jande. So everyone wants to get onto the coach, but just bear in mind, there's a lot of walking still to do. The more walking you do, the rest of the journey becomes easier as well. They stop and start, it makes it more difficult sometimes on the coaches and stuff. The people who walk, it is your responsibility to come find a group leader. Because everyone is scattered, you've all got our numbers. They're on the back of your ID cards. My name is Aves. My name is the last name on the ID cards at the bottom. You can ring me. I will most definitely be walking from Muzdalifah to the Jamarat. Generally, the people I walk with, we decide to go straight to the Jamarat, do the stoning, and come back to Azizia. If you go on the coaches, you will have to go to Mina. You will have to go to Mina, and then from there, again, we are allocated a time for our group to move forward and to the Jamarat, just to control the traffic of people. The traffic flow of people, control that going to Jamarat. Now, the people who decide to walk with me, we will go straight to the Jamarat, do the stoning, and come back to Azizia. Once we come back to Azizia, we will wait for the Qurbanis. What will we wait for? The Qurbanis, again, just in our group, there is at least 500 Qurbanis that are our first Hajj Qurbanis. These, again, is done on a lottery system, and then these could take
hours upon hours, 10 hours, 12 hours, 14 hours, 16 hours, however long they take. So again, there's no point asking is Shaji Qurbani ho gaya na, Shaji Qurbani ho gaya na, other Qurbanis then. The Qurbanis will take as long as they take. Shah Sahab, Munawwar Shah Sahab, my father, they go themselves to do the Qurbanis, and you will see them at the end of the day, they will be covered in head to toe in goat's blood, and you will see, and this is one of the benefits of Alhamdulillah traveling with us. Ittafaq hota hai ki the Qurbanis have been done. Alhamdulillah. Once Shah Sahab informs us that all 500 of the Hajj Qurbanis are done, we will inform you. At this point, you can get out your ihram, you can do your halaq and get out your ihram and freshen up. Depending on what time it is, we will start taking parties to do the tawaf-e-ziyarat. The group leaders will travel, we will all try to go walking. There is private transport available in form of taxis on the main roads, but as you can see right now, the roads are already very congested. The majority of the people walk. The only people I recommend who go on the transports is the people in wheelchairs. What often happens, what I've seen in previous years, is people go on these transports are stranded, they go round and round and they do Pere or Makkah Park, and often these people are left further away from Masjid Haram than when they started off. This is through no fault of ourselves, this is through no fault of the taxi drivers, this is just the situation in Makkah Park at the moment. Now, once the Qurbanis are done, the people who will be going to do walking to do the tawaf-e-ziyarat, depending on what time they're done, we will decide whether it's most beneficial to do it immediately or whether it's most beneficial to do it on the next day. Once we've done our tawaf-e-ziyarat, we'll go back to Mina. From Mina, we will go do our second day's stoning. On the first day, how much stones do we throw on the big shaitan? How much stones do we throw on the big shaitan? Exactly. On the second day, inshallah, when we go to do the stoning, how many shaitan do we complete on? 3. All 3 of them. Exactly. First 7 to the big shaitan, second 7 to the middle shaitan, and the last 7 to the third shaitan. Sorry. First small, then middle, then big. Once we've done the stoning, then you have the choice of either coming back to Mina, which I recommend, because there is most reward in coming back to Mina. And then going on doing the final days of stoning. Another point, you collect your stones in Muzdalifah. The night you are spending in Muzdalifah, collect your stones. These water bottles, keep a spare water bottle with you and hold more than 49 stones. Aksar, when you're taking out the stones, some fall out and then you start panicking, oh, I've run out of stones and this and that. So if you put in, say, 70 stones, then when you're stoning 49 stones and then you've got some to spare, and Aksar, you'll see people walking around by, have you got any stones? Have you got any stones? I've dropped my stones. And then you can hand your remaining stones to these people. Sorry, I'm not much of a public speaker, as you can probably tell, so just bear with me. So after we've done the stoning on the third day, we will come back to Azizia on the third day. On the final day of stoning, after we've done our stoning, where we will come back? Azizia. Inshallah. Inshallah, Allah Ta'ala will have made the Hajj easy for us by then. And then, Tawaf al-Wida. That is the final aspect of it. Again, the roads will still be busy at this point. So, again, I would recommend whoever can do this walking, do this walking. Exactly. ठीक है, जुम्मे से पहले नाश्ता करके लोग चले जाएं, पैदल जाएं, गाड़ियों पे जाएं, वहाँ जाके तवाफ विदा करें, जुम्मा पढ़ के वापस आ जाएं. What Shah Sahab just said is when we are doing our Tawaf al-Wida, it will be Jummah. Jummah, as you've already experienced, is very, very busy anyway. So, what to do? Have your breakfast, leave for Masjid Haram, perform your Tawaf al-Wida, and then come back. Tawaf al-Wida, a lot of people are under the misconception that this has to be your last Tawaf. You can go and perform more Tawafs after you've done your Tawaf al-Wida. So, Tawaf al-Wida is one of the is important. So get this done out of the way, and then by all means, go to as many Tawafs as you want after it. When we are done with our Tawafs, when we are done with when it is time to return back to the UK, again how we came back from Medina Sharif to Makkah,
it will be a similar system. We will put up the people on each coach, on each bus, on each coach, on these walls. You need to find your name. You need to find out what time your coach is departing. Please be ready before your coach is due to depart. We will talk about this in further detail after the Hajj, and we will tell you. There's a family of 4 who's leaving on the 25th. The majority of the people are leaving on the 26th and the 27th. You need to make sure you're on the coach that you're allocated on. There's a lot of people with same numbers and the same names, so just look out for your family members and make sure you know you're on that coach. Because if there is a coach leaving at 6 a.m. and another coach leaving at 10 a.m., the 6 a.m. coach is going on a different flight than the 10 a.m. coach. So if the 6 a.m. coach is leaving for, say, Saudi Airlines, and we've got people who are traveling on Oman Air going on that coach, then you'll be there to it. We will put these lists up, they will have the time that you need to be ready for, and then we will knock on the doors and tell you the people on this flight need to be downstairs now. Okay? Other than that, the people leaving from Medina Sharif, there's about 50 of you. You will also be leaving on the 26th. On the 26th of August, inshallah, you will be leaving from Medina Sharif. 26th of August will be a hectic day. We will make arrangements for the luggage going to the airport. There's one coach leaving from Medina Sharif, the remainder of the coaches are leaving for the airport. There is a lot of coaches, there's 13 or 14 coaches spread out over the 2 days. So you need to ensure, I keep on stressing this point, you need to ensure you know exactly what coach you're on and you know exactly what time that coach is leaving. Once you get to the airport, I shouldn't have to say this, we'll get you to the airport 6 hours before, but I shouldn't have to say this, but through experiences from previous years, make sure you've got your boarding done and make sure you're on the plane in good time. We will get you to the airport in good time. Obviously, you will do your boarding and your checking in. If you miss your flight, this is on you. We will make sure every person is at the airport in good time. Obviously, if you miss your flight, this is your own fault. Because if you're at the airport 6 hours before, and you've had the opportunity to check in, and your luggage is gone, if you miss your coach from there, if you miss your plane from there on, this is through your own negligence. So please, don't run off to somewhere in Starbucks and Florida, just go get onto the plane. Other than that, as you can appreciate, the 26th and the 27th will be the busiest days at Jeddah Airport. So it is imperative that you get onto the planes and get home to your families, inshallah. Other than that, there's a lot of brothers and sisters who've got questions and stuff. I'm going to the other hotel in a little while. I will be back tomorrow. I will spend the full day here tomorrow, inshallah. If you have any pressing questions, my number, both my UK and my Saudi number, is on the back of your cards. WhatsApp me any questions on my UK number, or you can text me any questions on my Saudi number. Text me any questions, and inshallah I'll do my best to get back to you. If I take some time, it's not because I'm ignoring you, it's because I'm busy with something else. Other than that, I'm going to hand the mic over to Sayyid Talha Bukhari now. He will run through all the the religious aspects of the Hajj. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه.
firstly, before I talk about performing of the Hajj, I'd like to see a show of hands of how many of you actually understand the performing of the Hajj. Who are confident? Come on guys, stop learning. It's all on you now. Well, I was just going to merely stand up and say, yesterday you had the Urdu and today literally you had step by step by my elder brother. I was just going to pass the mic over to the Sheikh and sit down and say my job's done. But I think there's a few of you who are telling people. And, but inshallah, I will try my best to go through the acts of Hajj. But another thing which I'd like to say before I start this is that I am only going to talk about the actual performance of Hajj. Okay? So don't turn around and ask me what time the buses are going to come or the coaches are going to come, because I have no idea. And I'm just going to tell you that, and I've had that quite a lot when people have been approaching me. The intizamiyah is not on my head. I am just a follower of the Shaykh. Whatever the Shaykhs tell me to do, the Shuyukh tell me to do, I do. Inshallah. So, like I said, the intizamiyah was, alhamdulillah, it was my elder brother who went through everything with you, told you what you need, what you don't need. Someone asked me if I can take an inflatable mattress yesterday. I have no idea, honestly. It doesn't mean anything to me. But inshallah, I'd like to start off our journey of Hajj and where it will start off. The journey of Hajj, as we know, which after the fara'id and the wajibat and the sunnah, which all collectively complete the Hajj Mabrur. And then the refraining of the certain things the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam told us about. The first thing we should do, and we will do, is to shower, to cleanse yourself in the best of manners, to do ghusl, which is taken and derived from the ahadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, to trim your nails if need be, to cut your hair if need be. And once we have done this, we are clean and purified. And we are ready to put the ihram on. Once we have put the ihram on, and we have read the 2 nawafil for the ihram, we will do the niyyah of the Hajj, inshallah. The ulama are with us from the hotel. From the hotel. The ulama are with us, and they will guide us in the best way to do the niyyah of the ihram for Hajj. Once we have done that, as you know, the intizamiyah is saying on the 7th we will go to Mina. However, like I said, I am only telling you what the fard, wajibat and the sunnah are. On the 8th of Dhul Hijjah, to do wuquf in Mina is wajib. It's sunnah, sorry. On the 8th, to do wuquf in Mina is sunnah. The time period of this is from the 8th Zohar to the 9th of Fajr. However, what is wajib in that is to do wuquf in Mina from Zohar to Maghrib. And then after we have done that, at this period, we have entered the 9th of Dhul Hijjah. We have to complete 5 salah there, which is sunnah. Sorry. On the 8th of Dhul Hijjah, when we have entered Mina, from Zohar to the 9th of Fajr, which completes 5 salah, is sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On the 9th of Fajr, we will go towards to do wuquf in Arafat. And this is what is fard. To do wuquf in Arafat is fard. And to do wuquf, again, like I'm saying, I am only regurgitating and telling you the usul behind it. To do wuquf even for a second
in the land of Arafat is fard. However, what is wajib for this, it's from the salah, from the night of Zuhr ila Maghrib, is wajib. And the time period that has been given to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the sunnah, or what is prescribed where we can do wukuf, it's from the Zuhr to the 10th of Fajr. And again, if someone stays there for a second and he leaves the land of Arafat, his fard is completed. However, he has not completed his wajib, which is to Maghrib, and then that will become lazim upon that person. When we have stayed in Arafat until the 10th of Fajr, and until the Fajr, which is on the 10th, we will read Zuhr and Asr in their own time, behind our own Imam, in the tents we have been provided with. Okay? And after that, inshallah, on the 10th of Asr, dua will be done by the shuyukh, by Qibla Hazrat Sahib, on the 9th, sorry. It's with the Asr and the Asr, Dhuhr and Asr of the 9th, we will read in our own tents, behind our own Imam, the shuyukh. And dua will be done, and until the 10th of Fajr, which is the time allocated. Then we will do wukuf in Muzdalifah. And this again is wajib. To do wukuf in Muzdalifah is wajib. To do wukuf in Arafat was fard. And the time period we had was Zohar? No. The time period we have to do wukuf, to complete our fard, it is from the Dhuhr to the Fajr. However, what is wajib is from Dhuhr to Maghrib. Okay? Do not forget that. Should I take questions at the end? To stay. Sorry, I do apologize. To stay. Wukuf means to stay. It's from waqafa yaqifu, means to stop, to stay. And it's thank you for asking that, because I would have carried on. But then again, you'll see the signs which say wukuf, but now you know, inshallah. And then after that we will do wukuf in Muzdalifah, which is wajib. And this is from the Tulu' al-Fajr on the 10th of Dhul Hijjah. And the first thing we will do here, once the time period that starts is the Tulu' al-Fajr, the rising of the sun for Fajr. Okay? On the 10th of Dhul Hijjah, once we have entered there, the thing that we will do is read Maghrib and Isha together. And where is this? Is the Muzdalifah. Is the Tulu' al-Fajr of the 10th. Okay? The 9th is gone after Maghrib. We're in the 10th now. And once we have read Maghrib and Isha, again, there will be one adhan for the salah, and there will be two iqamat to separate the two salah. The fard of Maghrib will be read, and then the fard of Isha will be read, and then after that you will read the witr of Isha. Okay? After we have done that, and when the Fajr adhan is done, we will have prayed the Fajr adhan in Arafat, in Muzdalifah, sorry, and we will go pelt the big shaitan. Yeah. So the Intizamiya is saying that, and the Shuyukh are saying that after Isha, you should gather all your pebbles, all your stones after Isha. Is that understood? Yeah? Awfully quiet. Yes? Okay. Unless I have to get the big shuyukh in and then they'll get it going properly.
once you have collected your stones, as soon as the Fajr Salah Adhan is done, we will perform our Fajr and we will go towards pelting the big shaitan, which inshallah, which is known as the Jamratul Aqaba. Okay? Once we have pelted the shaitan, which is on the side of Makkatul Mukarramah, the big shaitan, you can't miss it. I hope no one misses it. Inshallah. Once we have pelted the shaitan, we will wait for the Qurbani to be done. We will make our way back and we will wait for the Qurbani to be done. And like the Intizamiya and like my other brother he had stressed on this fact that the Qurbani could take however many hours it can take. It can take half a day. I do not know. However, as soon as we get the phone call from the Shaykh themselves, who have told us that the Qurbani is done, you are not allowed to do Hajj. Yes? Is that understood? Yes. And I cannot stress on this enough. There was a mas'ala that came to my ustad when we came to Saudi a year back. And the question that was asked, and alhamdulillah, I am so happy and it makes me feel blessed to be a part of this group, that not until 500 Qurbanis have been seen by their own eyes, they do not tell us that the Qurbanis have been done. One person said that I had 37 Qurbanis to be done. He said I had left it in the hands of the person who was doing the slaughtering. And an hour later he said I have done all 37. But that same person in front of my eyes had took about 152 people's order. And he said it's physically impossible to have done that in an hour. And then my sheikh themselves went to see what is going on. They said that I see that these people slaughter 2, 3, 4, 5, and they tell people who have ordered 5 that their 5 are done. Does that make sense? So if 10 people have ordered 5, they'll slaughter the 5 and tell the 10 people that your 5 are done. But alhamdulillah, and thumma alhamdulillah, that we have the best guide with us, who waits until every single one of the slaughters have been done, and then informs us of the slaughtering to be done. Alhamdulillah. And once the slaughtering has been done, we will do halq or qasr, which is the shaving or the trimming of the hair. Once we have done that, then we will go to do tawaf al-ziyarah, which, again, I am stressing that this is a fard. It is a fardi thing that we have to do. Okay? And after you have done your halq, you have changed. Obviously, the Intizamiya told you that this would be on the Jum'ah. Okay? And they told you the best way to do it. To go in the morning after you have had your breakfast, do your tawaf al-ziyarah, read Jum'ah, and come back. Sorry, that's tawaf al-wida. Sorry, I do apologize. So once we see, that's why I said the Intizamiya it's not my expertise, it's not my place of expertise. That's way beyond me. I do apologize. Okay, so alhamdulillah, yeah, I am just crawling just as though you, just the way you are. Okay, yeah. So another thing, that to complete your tawaf al-ziyarah, it's of 2 things: the tawaf and the sa'i. Do you understand that? And the difference between, I'll tell you now whilst I'm on the topic, the difference between the tawaf al-ziyarah and the tawaf al-wida is that in the tawaf al-wida there is no sa'i. Okay? And the tawaf al-ziyarah has to be done in the ayyam. Okay? Once we have done the tawaf al-ziyarah, we will make our way back towards Mina, which is the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On the 11th of Dhul Hijjah, we as a group collectively, everything we are doing, I urge you
And I am recommending you to do it collectively, as the group does. Stick with the group. We are following the shuyukh when we are doing this. Okay? And I know many of us have read books. But I'm telling you, there is a difference in reading something and experiencing something. Knowledge can be gained by reading and experiencing. And I am urging you, my brothers and my sisters, I personally will not be leaving the side of the shuyukh. Because I personally think that the best thing to do is stick with the group. And I urge the sisters and the brothers and those young brothers who are feeling fit and healthy, who are planning on walking, and Qibla Hazrat Sahib already said that they were going to take them to Mina walking anyways. But apart from that, it is impossible to complete, well, virtually impossible to complete the whole of Hajj on foot. Okay? And this is again to do with the Intizamiya and the people sorting everything out. Once we have come back to Mina, and we then on the 11th of Dhul Hijjah, we will go to pelt the 3 jamarat, the 3 shayateen, well, the shaitan, by his 3 places. The small first, middle second, and then big third. Understood? And what date is this on? 11th of Dhul Hijjah. Just on the there, don't just kind of just yourself highlight to me what's version, what's the problem. Anyway, I mean, No, okay. Before, on the third, then before, Okay. 13 one. Okay, I mean, so the 3 jamarat that you are going to pelt is wajib. Okay? The coming back to Mina is sunnah. Understood? The pelting of the 3 jamarat on the 11th is wajib. Okay? Once I have been telling you this, have I not? Yes. That what is farad and what is wajib as we have been going along. Samia. Then we will make our way straight back to Mina. After the 11th we have pelting, we will make our way back to Mina. Now on the 12th, which is the last day of Hajj, we have to pelt the shayateen again, the shaitans again. Okay? This is after the 11th, once we have made our way back. On the 10th, On the 10th. What's farad, what's the sunnah? On the 10th, you are going to do wukuf in Muzdalifah. Tamam? You are going to stay wukuf. في لغة العربي, you will stay and you will do wukuf in Muzdalifah. And then, that is on the 10th, okay? And this is wajib. And the time is Tulu al-Fajr. Okay? On the 10th of Dhul Hijjah. And we will read the Salatul Maghrib wa Salatul Isha together. Yes? And we will read them together with 1 adhan and 2 iqamat. On the 10th, brother, this is Muzdalifah we are talking about. Okay? Yeah, the day of 9th has gone. We are on the night of 10th after Maghrib. Remember the day goes. Yes? And yeah, any questions that someone has not understood, come to me afterwards. I have it written down and I can show you. Maybe that will be easier. Okay, on the 12th, which is the last day, we will go to put the jamarat again. In the same order. Yes? And then after that, there is only one thing that we have left to complete our Hajj. Yes? Which is? Tawaf al-Wida. And the ulama say that you can do this whenever you want until you are in the boundaries. Up until you are in the boundaries. And if you leave the boundaries without doing this, then down becomes lazim upon you. Yes? And then alhamdulillah, we have completed the act of Hajj
the way the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam prescribed to us. And I cannot urge you enough again to tell you that everything has to be done with tartib in order behind the ulama that we are following. And the majority of us and all Ahnaf, someone asked me that what if I am not a Hanafi? And I gave him the response of the Usul al-Fiqh response, which is al-aktharu fi hukm al-kull. That the majority of us are Ahnaf, our ulama, our shuyukh are Ahnaf, and that is how we are going to perform our Hajj. And that is how we are recommending you to perform your Hajj. Inshallah. If you have any questions, fire away. Mina and Azizi are not in the boundary, no. That is, they are not in the boundary. That is why when you are doing qasr, as soon as you have left the boundary and you enter your qasr, what's it called? Yes. On the 12th. नहीं आप मेरे ख्याल तो आखिर विदा की बात कर रहे हैं। आप जब आखिरी दिन होगा तो हम सब इकट्ठे ही होंगे। आखिरी दिन लगा के हम कंकरिया तो इंशाल्लाह सीधा इधर ही आएंगे। जुमेरात को कंकरी मार के जुमेरात को यहाँ आ जाएंगे। जुमे को 13 आगे जुमे को 13 दिन आ जाए, वो जुमा भी पढ़े और साथ वहाँ पे विराम करके आए। पढ़ लिया है, वापस आ गए। मिना जाना फर्ज है या सुन्नत है या अजीजिया वापस आ सकते हैं? कुछ भी मिना के अंदर रहना सुन्नत है, ठीक है। और कल हमने ये प्रोग्राम बनाया था, तो अच्छा हुआ ये सवाल आ गया है कि हम वापस इधर आएंगे, यही कहा था। लेकिन यहाँ हमने काफी सोच विचार किया है कि अगर हम यहाँ आपको लेकर आते हैं, फिर यहाँ से पैदल लेकर वहां जाते हैं, फिर आपने आगे वापस लौट के कंकरियां मारने आना है, तो इससे शायद काफी ज्यादा थकावट हो जाए। समझ आ गई आपको? लिहाजा हमने अब ये इरादा बनाया है कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वहां से यानी हरम से जब आप तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे, तो वहां की कोशिश करेंगे कि वहां से थोड़ा सा आगे जाके कोई बस जहाँ से मिले, कोई टैक्सी मिले, तो वो जो जगह आपको चाहिए वहां चले जाए, ताकि दूसरे दिन या दोबारा आपको घेरा यहाँ से पड़े। आपको समझ आ गई? तो उससे वो आप जाएंगे। यानी कल जो कहा था यहाँ आना वापस, उसको कैंसिल कर रहे हैं ताकि डबल फेरा हो। बात समझ आ गई आपको? तो अब तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद फिर स्ट्रेट कहाँ जाएंगे? मिना। फिर बोलिए कहाँ जाएंगे? मिना जाएंगे। और मिना जाके फिर अगले दिन इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमने ये इस पर काफी आज शाह साहब बाकायदा जमरात के पास गए थे, सिर्फ इसीलिए अकेले गए थे, तो अनु लेके जाएंगे रात को वही 10:30 बजे लेकर जाएंगे। खुद ये अकेले जाएंगे। ये सारे सानू डरान लगे हैं। सुनिए कि 10:30 बजे इंशाल्लाह जाएंगे। कितने बजे? आप फर्स्ट टाइम इंग्लिश में। फिर भी आपको जो क्वेश्चन, मैं जान के आज लेट आया हूँ कि मेरे से स्पीकर दूर नहीं रह सकता, ना मैं स्पीकर से दूर रह सकता हूँ, फिर ज्यादा टाइम मैं ले जाता हूँ, इसलिए मैं आज आ ही ले लूँ। Just read it again in English for people. Okay, so yesterday what was told by the shuyukh was that after pelting the pillars, after tawaf ziyarah, you were going to come back here. However, that's changed now, and you will go straight to Mina, which is the sunnah of Rasulullah. मीटिंग पॉइंट पूछा इन्होंने। मीटिंग पॉइंट वो अल्लाह खैर करे आपके पास अपने बैग होंगे, आपके स्कार्फ भी होंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये जगह है पहचानने के लिए। समझ आ गई आपके? बैग अपने पास रखें, स्कार्फ अपने पास रखें, तो नंबर 3 टॉयलेट नंबर वो बिल्कुल सामने है। उसके आसपास कोई आप यानी सख्ती का ये वहां आसपास घूमते रहे, फिरते रहे। हमारे साथी अपना वो निशान लेकर खड़े होंगे।
सदात वाला, समझ आ गई आपको? वो निशान लेकर करेंगे, हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे। बाद दफा पुलिस वाले उनको नहीं खड़े होने देते, ये भी ध्यान में रखें, वो उतरो नीचे करवा देते हैं, वाकई करवा देते हैं, क्योंकि वो इस तरह से वहां पर वही खड़े हो जाए ना डंडे वाले। लेकिन कोशिश वो करेंगे कि गायब वो सामने लेकर रखें अपने साथ, समझ आ गई? तो इंशाल्लाह फिर वहां से आगे जितने लोग जमा होते जाएंगे, कोई ना कोई साथ लेकर आगे बस में बिठा देंगे, आगे से जाके बस वाले होंगे वो उसी बस के अंदर ही जो भी किराया 10 हो 20 हो 30 हो जो भी किराया होगा उसी बस में सीधा बस से मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वो समटाइम सुन लीजिए, समटाइम नहीं बल्कि जरूरी है, थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। वो मिस्रा कुबरी देखिए आपने, वहां से वो जो शार इब्राहिम खलील है उसके पास वो मिस्रा कुबरी है, बसें आगे नहीं आने दे रहे उन दिनों में, आ सकती नहीं है, आप खुद ही देख लेंगे। तो बसें थोड़ा जहां दूर होंगी वहां जाना पड़ेगा, समझ आ गई आपको? उस वक्त ये जहन में नहीं होना चाहिए कि पता नहीं इधर आ जाए बसें क्या था, लेकिन जब आ ही नहीं सकती तो फिर क्या हो सकता है, उधर भी इंतजार करना पड़ता है, ठीक है? तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह वहां पर फिर हम ये बस से तवाफ ज़ियारत 10 तारीख को, कौन तारीख को? वो पहला बार मुश्किल है, फिर इसके बाद तो एक ही बार वापस आना आपने, फिर तो तवाफ अलविदा के लिए जाना आपने, फिर आपको हर चीज नॉर्मल होगी। आपको यहाँ का भी पता है, यहाँ मैंने कल भी बताया था, बेटा एक बेटी खड़ी है सवाल का जवाब देते हैं, कल भी बताया था कि एक तो आप शारे सिद्दकी को याद रखते, कौन सी शारे सिद्दकी याद किया, देख लिया आपने, उन पर नोट कर लिया। शारे सिद्दकी पर आएंगे ना, जब आप मेन रोड से, जब मेन रोड अजीजिया का मेन रोड जब उस पर आएंगे तो शारे सिद्दकी पर आप उतरेंगे। कहाँ? शारे सिद्दकी। जब आप शारे सिद्दकी पर चलेंगे जमरात की तरफ जाने के लिए, ये जिसमें जाली लगी हुई है ये सिद्दकी है, जाली दरमियान में लगी है ना जिस रोड पर, या बाहर जाएंगे आज देख लेंगे, इसका नाम शारे सिद्दकी है। क्या नाम है? शारे सिद्दकी। बिल्कुल, ये आप होटल से बाहर निकले, मुझे नहीं पता, वो सारे फेटो क्या है सब पता है। हाँ, यानी जैसे आप मेन रोड पर निकलेंगे तो उसका नाम शारे सिद्दकी है। शारे सिद्दकी पर आएंगे तो आप होटल में आ जाएंगे। दो चीजें वैसे भी कल बता दी थी, मदरसा और मस्जिद के पास आप और अजीजिया मेन के पास आ जाएंगे तो वहां पता चल जाएगा। लेकिन मेन ये करीब कहाँ है, ये दोनों चीजें शारे सिद्दकी पर। हो सकता है कि मस्जिद वाला मक्के में और भी कोई हो, लेकिन आप ये कहेंगे कि शारे सिद्दकी जो अजीजिया में शारे सिद्दकी, यहाँ पर आप आए तो जैसे आप शारे सिद्दकी पर चलने लगेंगे तो शाह साहब बता रहे थे कि दूसरा रोड है, कौन सा? दूसरी गली हमारी होटल की तरफ आने वाली शारे सिद्दकी, तीसरी है, चलो तीसरी मेन रोड से तीसरी कह रहे हैं, तीसरी सड़क है, गली है। जहाँ हम अपना सदात का पहले दिन भी इनको कहा था साथियों को, अगर नहीं लगाया तो लगा देंगे, वहां पर वो सदात का कोई न कोई रास्ते पर मेन रोड पर भी लगा देंगे, मेन रोड के यानी जहाँ से मूव होते हैं तो यहाँ हम आ जाएंगे। अब एक तवाफ़ ज़ियारत और तवाफ़ अलविदा का इन्होंने कहा है, तवाफ़ ज़ियारत के साथ सही है और तवाफ़ अलविदा के साथ सही नहीं है, ये भी आप फर्क तवाफ़ ज़ियारत के साथ सही करनी है और तवाफ़ अलविदा बगैर सही क्या, बस 2 रकात जो भी तवाफ आप करें, जब भी तवाफ करें 2 रकात जरूर पढ़नी, समझ आ गई है? यानी ये मेन चीजें। एक और मैं आपको बहुत आसान बात समझा दूं, फिक्र की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए हम टाइम से पहले भी नहीं आपको निकलने देंगे। कौन सुभान? यानी आपको ये तो समझा, वैसे आपकी तसल्ली के लिए नहीं, हमारे साथी आपके साथ हैं, जब भी निकलेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे, आप निकलना है चलते हैं, और जब रोकना है तो रोक रहे, तो तेज नहीं ला रहे निकलने वास्ते। हम देखो, हम हॉलीडेज के लिए नहीं आए, बोलो हम हॉलीडेज के लिए नहीं आए, हम अल्लाह की रजा के लिए आए। तो अब जब अल्लाह की रजा के लिए आए तो फिर हॉलीडेज पर जरा तवज्जो हटा दे, यानी हॉलीडेज के ऊपर तवज्जो नहीं रखनी है आपने, किस पर तो ध्यान रखना है? अल्लाह का हज पर। बोलो किस पर? तो हज पर ध्यान आपका तब रहेगा जब हमारी बात सुनेंगे तो, समझ आ गई? तो इस तरह इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह आपका हज आसान होगा, सहल होगा और इंशाअल्लाह आपकी कोई दिक्कत आपको तकलीफ नहीं होगी। अब जी बेटा कोई क्वेश्चन है जी? हाँ बोलिए।
जी On the 7th, where will we leave our keys to the room? जी जी आपने सवाल ये किया कि की कहाँ रखनी है चाबी। हम इंशाल्लाह एक बंदा अपना यहाँ पर परमानेंट रखेंगे, समझा के एक बंदा परमानेंट रहेगा, चाबी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे ही है ना? उसके पास आप चाबी जमा करवा के जाएंगे। अब अभी बता देते हैं कौन सा बंदा है, या आप ऐसा करें यहाँ पर, हाँ ये हाफिज साहब है इधर, हाफिज यूनुस साहब, साबिर साहब, अच्छा एनीवे हाफिज साहब या एक बंदा उनको बुला रहे हैं, हाफिज यूनुस साहब या हाफिज साहब अलीसान सब तरह लगे उन्होंने। हज बदल का नियत भी बताएंगे और मैं मसला भी उनको बता देता हूँ। उनका सवाल सबसे पहले ये है कि सॉरी वो सिस्टर बेटी ने जो सवाल किया था, एक ही है कि 7th को कब जाना है, ये सवाल है, और चाबी किधर छोड़नी है, यही 2 सवाल किए ना आपने। हाँ It is recommended not to use a chakri for shade in Mustafa and Arafat. अच्छा इंग्लिश में जवाब ये दो इनको कि ये जो शेड का मसला होता है ये बिल्कुल गलत है। अगर ऊपर रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई ममानत नहीं है। पहली बात है मुज़दलिफ़ा तो रात होगी उधर, तो आपको शेड की जरूरत नहीं है, समझ आ गई, छतरी की जरूरत नहीं है। हम आप चांद से तो बच नहीं सकते एक। और दूसरी बात यह है कि दिन के वक्त भी इंशाल्लाह आपको जरूरत नहीं होगी, वो खेमे होते हैं, बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ छतरी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रखना कुछ चाहेगा तो कोई हर्ज नहीं है, ये मसला इंग्लिश में बता दें। So the masala which the sister put forward was the use of an umbrella. She specified Muzdalifa and Mina and Arafat. I'm not sure if she specifically meant them places or whilst you are in the halat of ihram. However, it doesn't matter where you are, as long as you are in the halat of ihram, it is jais for you to use an umbrella, regardless of where you are. Because you have to remember, when you're in Mina, there's going to be a tent over you anyway. You're going to get shaded by that. You're going to get shaded by tents in Muzdalifa as well. So it's another question which is important. Are you allowed to use the hot ones? Which is more of a sensitive question. Our ulama have said you are. Okay? And you have to remember, you are in halat ihram. It's very, very difficult for you to mess that halat up. The ulama have brought very, very safety precautions for it. Covering your hair, it's covering your face. It has to be more than 3/4 for your face to be covered, or 3/4 of your face and more. With the headgear, it's covered for more than half a day. But the truth of the matter is, we refrain from these stuff. The question which I had here is, are we allowed to use medicines, i.e. smelling creams during ihram, even if they have a scent? For medical purposes, you are allowed to use these medications. Okay? And like someone questioned, are you allowed to have a sweet? You are, because it's food. Food smells. I'm telling you, these chicken salons that you have smell really badly, but you're allowed to eat it. Okay? Whilst you're in the halat of ihram. Like my uncle made a very amusing joke yesterday. You're not fasting. You're actually in the halat of ihram. So you have to differentiate from the two. Do you have any questions? So would the elderly would bring 2 talaqs after Hajj? One is Bilal, one is Ziyara. Please could you respect another person while she's asking a question, please? So for both those talaqs, we have to go to Masjid al-Haram. Now, if we have one of our elderly parents with us,
is it possible or is it permissible for us to go for one time, do the tawaf al-ziyarah, and then do the sa'i, and then sit there for a few hours, and then do the tawaf al-wida and come back in one go? No. Ladies never English में जवाब It's impermissible to do that. Because if you remember, I did say to you that after cutting the hair, we will go to the Tawaf al-Ziyarah. And then after that, we will come back to Mina, which is Sunnah. Okay? Yeah. And you're asking if you can do it together while having the rest. Yeah, but you have to remember that you have to pelt in between them, you have to pelt the shaitan, the jamarat. So you have to come back to pelt the shaitan, the jamarat. Does that make sense? यानी सवाल इनका ये था कि अगर कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा है साथ, तो वो तवाफ ज़ियारत करते हैं तो थोड़ी देर के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद, क्या वो तवाफ अलविदा भी कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है, यही है ना? तो आंसर इसका ये है, चूंकि जो कंकरियां हैं वो अभी इनकी 2 दिन की रहती हैं, तवाफ अलविदा होता है जब हज मुकम्मल कर लेते हैं आप, समझ आ गई? ये जाने के लिए तवाफ अलविदा है, आगे तरतीब में नहीं रहता, तरतीब खिलाफ तरतीब है, तो तरतीब इंदल हनाफ वाजिब है, समझ आ गई? यानी ये काम पहले, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, लिहाजा इसलिए तवाफ अलविदा आखिर में होगा। और हाँ, अगर कोई माजूर है, तकलीफ में है, वो खुद नहीं कर सकते, तो वो तो वैसे व्हील चेयर पर करना है। तो दूसरी बात यह है कि व्हील चेयर भी वहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो ज्यादा लोग इसमें ज्यादा फिक्र में है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिलती है 2nd फ्लोर पर। कौन सी? इलेक्ट्रिक। वो 100 रियाल मेरा ख्याल है सिंगल बंदे के लिए लेते हैं, और वो तो सही और तो आप दोनों कर सकता है, और 2 हो तो फिर 200। देखा आपने कि माशाल्लाह जी तकदीर साहब कह रहे हैं कि वो 2 बंदे हो तो 200 और 100 एक हो तो 100, तो वो खुद ही आप चला सकते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल वो जो बना हुआ है ना, उसका ट्रैक सिर्फ उन्हीं के लिए है, वो जगह पर, वो इलेक्ट्रिक है 2nd फ्लोर। तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बाद बात आपको फिक्र हो जाती है कि अब ये कहाँ से इलाज करें, तो लोगों से पूछे जो वहाँ काम करते हैं, जो हरम के अंदर सफाई करते हैं, सबका हर एक को पता होता है। सही के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के साइन भी लगे हुए हैं, तो आप ऊपर जाएं और वहां से आप हासिल कर सकते हैं। जी, सवाल क्वेश्चन है। व्हील चेयर का कोई रखने का कोई फैसिलिटी है कैंप में? जो लोग हाँ, कैंप में तो वो साथ ही रखनी पड़ती है व्हील चेयर, कैंप के अंदर रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात ये है, जब चलने के लिए जाएगा तो व्हील चेयर साथ में जा सकता है ना, चलने पुश कर कर? हाँ, आपको खुद करना है तो जा सकते हैं, कोई उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो है तो मुश्किल, सफर काफी लंबा है, व्हील चेयर में बहुत लंबा सफर है तो मुश्किल, लेकिन लोग होते हैं, जाते भी हैं हिम्मत वाले, तो है मुश्किल लेकिन जा सकते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा सामान जो बैग वगैरह होते हैं ना, वो छीन लेते हैं, इसलिए बार बार आपको कहा कि बड़े बैग वगैरह ना रखें। आप कोशिश करें जो आपके अपने बैग हैं, ये जो सदात वाले यही रखें, क्योंकि ये तो आपने रखने रखना है। वो जब आप जमरात को रमी कर के लिए जाएंगे तो रास्ते में पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो बड़े बैग छीन लेते हैं, तो आपको छीना जाएगा, फिर वापस भी नहीं मिलेगा। लेडीज एक ऐलान सुन ले, लेडीज, हमारी माएँ बहनें बेटियां अगर कोई लेडीज के रिलेटेड कोई सवाल करना चाहें तो छोटे पीर गुलजार शाह साहब की अहलिया हमारी बहन है सायरा, वो आई हुई है। गुलजार शाह साहब की अहलिया वो आई हुई है, कमरा नंबर 10 तारीख जांच का 408 सानू और काम होंगे ने, अक्सर फोन आता रहता है, नाल उन्होंने पता लगा जो बंदे नाल लैके भी तो कितने बिजी होंगे ने। अच्छा, 408 में वो है सायरा, बीबी जी सायरा। तो अगर
हमारी माओ बहनों बेटियों ने कोई सवाल पूछना हो तो वो हमसे पूछ सकती है, वो आलिमा है आला। ठीक है, चाबियों के वाले से सवाल उन्होंने कर दिया। चाबियां इंशाल्लाह हाफिज साहब आए हैं, हाफिज साहब चाबियां इकट्ठी कर लेंगे, फिर हम उनको संभाल लेंगे, फिक्र मत करें। समझ आ गई? चाबियां हाफिज साहब को जमा करवा देनी है आपने। हाफिज साहब खड़ो बनो के थोड़ा सा प्रोग्राम मुकम्मल होने देंगे, क्योंकि चाबियों का बार बार ये मसला है। तो चाबियां हाफिज साहब क्योंकि बसों की तरफ जाना है, वो रास्ता वही जानते हैं मक्के का, इसलिए उस वक्त बिल्कुल ठीक उन्होंने याद करा दिया। मैं तो बसों की तरफ आपके साथ हूँ, जो बसें लानी, क्योंकि बसें जो ड्राइवर्स है ना, ड्राइवर्स ये सारे बाहर के आर्जी आते हैं मौसम के लिए। मौसम आप सीजनल है, क्या होते हैं सीजनल, उनको रास्ते भूल जाते हैं। तो कम से कम एक बस में ऐसा बंदा होना चाहिए जो पीछे दूसरों को लेकर आ जाए। तो हाफिज साहब हमारे साथ हमेशा आते हैं, इनको मक्के की गली गली का वजह, क्योंकि ये यहाँ पर पहले जवानी में टैक्सी करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 10-12 साल से हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें अजर अता फरमाए। ये साबिर है आप, ये भी बेटा, ये भी क्योंकि जीजिया में शीशा जीजिया में रहती इसी एरिया में। तो चाबियां आप इसके हवाले कर लें, आगे फिर हम इंशाल्लाह हमको संभाल लेंगे। ठीक है, आगे हम जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनको बुला के उनके हवाले कर देंगे, ताकि रहेंगे इधर ही लेकिन उनके कब्जे में रहेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है ये। इन्होंने बेटे ने सवाल किया है, चूंकि 10 को काफी बिजी होना है तो काफी काम में होना, बिजी होना है, यानी यूं समझ लें कि ये हम सब बिजी होंगे, ये भी और आप भी और हम भी। 11 की जो गीटियां अब एक जहन में रख लें, सवाल के बाद टाइम शुरू होगा, अब आगे टाइम ही आपके पास। जब तक आप नहीं मारेंगे, जब तक आप नहीं मारेंगे आपकी पूरी नहीं होगी। यानी आप दिन को, जोहर को, असर को, मगरब को, शाम को, रात तक भी मुस्ताब तो मगरब से पहले पहले मार लें, लेकिन अगर नहीं मारी तो आप तो शाम को भी मारेंगे तो हो जाएगी, लग जाएगी। समझ आ गई? तो अमल अदा हो जाएगा। ठीक है, जब तवाफ़े ज़ियारत जो करने जाऊंगा मक्का में एंड तवाफ़ अलविदा, उसका कोई नियत है? ऐसे कुछ नियत उधर में जब जाऊंगा? जब किसकी तवाफ़ ज़ियारत के लिए जब जाऊंगा काबा शरीफ के बात ये है, एक बात सवाल है हाजी साहब का, वो बहुत अच्छा है। इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, हर अमल का दारोमदार नियत पर है, और नियत बोलने का नाम नहीं है, नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत दिल के इरादे का। मैं आपको एक मसला समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। आप घर से निकले हैं जोहर की नमाज पढ़ने, कौन सी? जोहर की। आपको पता है कि घर से निकले हैं, जोहर की अजान हो गई है, हमने नमाज जोहर की पढ़नी है, इसी इरादे से आप तैयार हो निकले हैं, मस्जिद में आ गए, जमात खड़ी हो गई है, पीछे आए, आप कहते हैं जी 4 रकात नमाज फर्ज, अल्लाहु अकबर। क्या मैंने कहा? वक्त नमाज, लफ्ज क्या निकल आए हैं? बोलो बोलो, असर के लफ्ज असर के निकल आए हैं। नियत आपकी क्या है? घर से निकले किस लिए? इरादा क्या है? खड़े जमात किस बात की हो रही है? लेकिन आपके लफ्ज क्या निकले हैं? असर की। आप क्या बनेंगे? हाँ, क्योंकि इरादा दिल का आपका जोहर है, निकले इरादा जोहर के लिए। समझ आ रही है आपको? जी जी जी। इसी तरह जो आपकी नीयत है, इरादा है, लफ्ज कोई बदल भी गया तो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपका हज हो जाएगा। आप तवाफ़े ज़ियारत की नीयत से निकले हैं तो क्या होगा? तवाफ़े नीयत तवाफ़े अलविदा के लिए निकले तो क्या होगा? तवाफ़े अल। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका आंसर भी हो गया और क्वेश्चन भी हो गया। ये इंग्लिश में बता दो।
چونکہ سوال اہم ہے. چوہی صاحب ہمارے بہت پیارے ساتھی نیوٹن سے ہیں, ہمیشہ سوال اچھے اچھے ہمیں دیتے ہیں. سنیے, انہوں نے کہا کہ کسی سسٹر نے یہ بات کی ہے کہ جب طواف الوداع ہو جائے, طواف الوداع کی بات کریں تو پھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا مکہ کو. یہ کہنا ہے. سن لیجیے, پہلا میں آپ کو ایک بات پر پابند کرنے لگا ہوں. کوئی سوال کرنا ہے تو ایک دوسرے سے نہیں کرنا, ہم سے کرنا ہے, ورنہ یہ اس طرح کی کنفیوژن نہیں ہوگی. کیونکہ اگر سارے بندے انجینئر ہو جائیں تو پھر گالی کو نہیں بنتی, اور سارے بندے مفتی ہو جائیں تو پھر بھی گال نہیں بنتی. جس کا کام اسی کو ساجے. سوال ہم سے کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ کے پاس کام تو بندے نہیں ہیں, 1 2 3 4 5 ابھی 6 ہمارے اور بھی ساتھی ساتھ ہوں گے وہاں پر. قاری تنویر صاحب ہیں, انگلش اسپیکر ہیں. قاری صفت شہزاد صاحب ہوں گے وہاں پر, وہ پیٹر برو مسجد کے خطیب اعظم ہیں. یہ بھی 7-8 علماء ہوں گے انگلش والے. اس میں کم از کم 2-3 بندے بھی موجود ہیں, 3-4 کم از کم موجود ہیں. لیڈیز کے لیے بی ہے. اگر کوئی کنفیوژن, کیونکہ لیڈیز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے بیٹی ہماری کوئی, ہماری جو بہن ہے اس کو کوئی سوال اس کو کرنا ہو تو ہم سے ہمارے سے پوچھ رہی. آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ 408 انہوں نے زیادہ پتہ کیونکہ دیہڑی والی 5 نمازیں نہ 5 اسلامی کی ہوتی ہے. 408 ہماری سید گلزار شاہ صاحب کے گھر والے, ہماری بہن, وہ ہماری اصل میں بھانجی بھی ہے. بھانجی سے ایک ہماری تایا زاد بہن کی بیٹی ہے, اور پھوپھوزاد بھائی کی بیٹی ہے سگے, اور پھر آگے پھر ہماری بھابھی بھی ہیں. تو الحمدللہ اس لیے ہم اتنی ضرورت کر لیتے ہیں, ورنہ بھابیاں اللہ چمڑیاں سڑتی ہیں. اس لیے وہ 408 میں وہ ہے اپنی بہنوں کے لیے یہ نمبر. اچھا جی, آگے بات کام کی کریں. سوال آپ نے کس سے کرنے ہیں؟ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, قرآن میں جو ہے سوال ان سے کرو جو جاننے والے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی. اگر آپ وہاں پر ٹیلی فون کی فراغت مل گئی ہے تھوڑی سی, یعنی وہاں بیٹھے ہوئے, چلو جی انٹرنیٹ ہی ختم ہو گیا, کیونکہ انٹرنیٹ ہمیں ملتا ہے لمیٹڈ. یہاں پر ہم اپنے پاسپورٹ پر لاتے ہیں تو ان کو پہلے لائے تو 10 GB سے زیادہ نہیں مل سکا, کیونکہ ہم حاجی ہیں نا, حاجی کے پاسپورٹ پر. جب یہ گئے تو میں اظہر کا اس میں 62 GB تھا بچا ہوا, وہ لائے. ہمارا انٹرنیٹ بھی ختم ہو جاتا ہے جلدی جلدی. جب انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو پھر فارغ ہو جاتے, پھر مسئلے غلط مرضی. اس لیے یا اللہ انٹرنیٹ میں ختم کریں گے تاکہ مسائل سیدھے سیدھے چلتے رہیں. اچھا سنیے, بات اس طرح ہے کہ سوال یہ تھا, بات لمبی ہو گئی ہے. سوال بھی اس طرح کا تھا, الوداع. سوال یہ انہوں کیا تھا کہ بھائی جب طواف الوداع کر لیا, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی ہم حرم میں اب نہیں جا سکتے. حرم میں اصل میں ان سے جس نے سوال کیا, اصل میں یہ کوشچن لوگ کرتے, یہ جو ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ کم ہے کہ باؤنڈری کو چھوڑنا. باؤنڈری کو چھوڑنے کا کوئی ٹائم تو ہوتا ہی ہوگا, پر کوئی ٹائم نہیں ہے. باؤنڈری کو چھوڑنے کا کوئی بھی ٹائم ہے, یعنی حرم سے نکلنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, حرم سے نکلنے کا کوئی ٹائم ہے. جب پہلا تو جواب یہ ہو گیا, کوئی ٹائم نہیں. طواف الوداع آپ نے کر لیا, آپ گھنٹہ 2 4 6 دن 2 4 5 7 10 12 15 20 40 مہینہ 2 مہینے سال 10 سال جتنی دیر دل حرم میں رہیں طواف الوداع کرنے کے بعد آپ حاجی مکمل ہیں. سمجھ آ گئی. یہ اتنی لمبی بات میں اس لیے کہ آپ پکا لیں اپنے دل میں. لہذا ایک تو جو ٹائم لمٹ ہے کوئی نہیں ہے. دوسری اب میں وہ بتا رہا ہوں. دوسرا جو بات ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اصل سوال آتے ہیں بار بار, یہ میں آپ کو بتا دوں. اصل کو ایسے لیے کر دیجیے, اب طواف الوداع کر لیں, میں اب حرم میں دوبارہ جا سکتا ہوں, حرم میں دوبارہ جا سکتا ہوں. تو بھائی میں نے پہلے بھی بتایا تھا, آج کل بتا رہا ہوں, طواف الوداع کیا ہے, کوئی حرم سے ناراض تو نہیں ہوئے. سمجھ آ گئی. ایک بار نہیں 100 بار, ایک بار نہیں 100 بار جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جواب ہو گیا.
तसल्ली हुई कि नहीं? इंग्लिश में सुनना फिर अच्छा जी। हज बदल बार बार वो सवाल फिर बात रास्ते में रह जाता है। हज बदल जो है हर हाजी को जो हज करता है, इस पर सवाल हो रहा है कुर्बानी का। किसका होता है? कुर्बानी का। कुर्बानी हमने तो एक करनी है हर हाजी की। सबसे पहले दिन हम पहली फुर्सत में जब कुर्बानियां करते हैं वो इहराम की करते हैं। कौन सी करते हैं? ये बात आप सबसे पहले जैसे इहराम की कुर्बानी खत्म होती है हम उनसे कहते हैं इहराम की फौरी तौर पर हमें चाहिए जैसे ही टाइम होता है। दूसरी, हम भी लोगों पर जुल्म नहीं करते। जो बाकी की जो नफली कुर्बानियां हैं वो उसमें अगर 2, 4, 6 घंटे भी हमें इंतजार करना पड़े, हमें कोई उसमें फिक्र है नहीं है। जो वाजिब कुर्बानी है वो हम अपनी आंखों के सामने एक एक करवा के तब पीछे हटते हैं। लिहाजा ये जो कुर्बानी है 500 बंदा पूरा है वो तो हमने करनी है पहले, समझ आ गई। अब ये जो किसी का हज बदल करने आया है, किसी का हज बदल करने आया है, अब जब उसके नाम का कोई भी काम होगा तो वो बदल वाले के नाम का होगा। जब कर जो रहे ये रहे, समझ आ गई आपको? इसलिए हम उनके नाम की कुर्बानी कर देंगे। लेकिन वो हज बदल करने वाला जब इहराम बांधेगा तो वो ये नियत करेगा कि मैं फलां की तरफ से हज बदल की नियत से इहराम बांध रहा हूँ, या अल्लाह मेरे लिए आसान बना। एक ये तो लफ्ज है। मैं एक बात कर रहा था दिल के इरादे का नाम, वो बात फिर दूसरी तरफ चल गई। दिल के इरादे का नाम है नियत। अगर इन्हें पता है कि मैं हज बदल कर रहा हूँ फलां का, कि कोई कह रहा है, हमारी एक तो बहन उन्होंने कहा कि हम हुजूर पाक के नाम क्या हज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इहराम बांधते हुए कहेंगे इहराम मैंने बांधा अपने आका करीम के लिए, या अल्लाह आका करीम को क़यामत तक दर्जे उनके बुलंद तूने किया और हमारी तो दुआ है बुलंद फरमा, तो इसे कबूल फरमा और उनके सदके हमारी सारी इबादत कबूल फरमा। ये एक मिनट मैं उसका जवाब खुद ही देने लगा। दूसरा जवाब उन्होंने कहा जी कि चूंकि वो तो हज बदल की उनकी होगी तो हमारा क्या बनेगा जो हम आए हैं। हम आए अगर कोई देना चाहे अपनी तरफ से सुन लीजिए तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई देना चाहे, जिस तरह के लोगों ने सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां रखाई हैं, नफली जो हरम में आए हैं तो हरम में रोज रोज तो मौका नहीं मिलता, जहां से कुर्बानी शुरू हुई है वहां पर कुर्बानी लोग करते हैं, हमेशा से ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अपनी तरफ से हदिया है, तोहफा है। हुजूर के नाम पर करता है, कोई वालिदैन के नाम पर करता है, कोई दादा दादी के नाम पर, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लिखा दी है। जो अभी रहते हैं आज और कल का दिन है वो भी लिखा सकते हैं। दूसरी जो हम बात है कि इनकी कुर्बानी हम सब जितने भी हैं, हम कौन है? मुसाफिर हैं। हम कौन है बोलो? मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। अगर आप अपनी नहीं भी देंगे तो कोई हरज है? बोलो कोई हरज है? हाँ, अगर अपनी तसल्ली के लिए, अपनी तशफ़ी के लिए कोई देना चाहे तो नाम लिखा सकता है, वो कुर्बानी दे सकता है, वरना अदरवाइज मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। बस ये मसला है। ठीक है जी। Could we have a few English questions, please? On the 11th, so on the 11th of the year, after you stone the shaitan, you want to come back to Ethiopia before you go to Medina. So straight after you have pelted the shaitan, they said this before as well. This is the first time you are pelting the shaitan. No, this is the 11th. No, sorry, this is the second time. Yeah. We will make our way back towards Mina. Straight after pelting it, we will make our way straight back to Mina. On the 12th. Do your tawaf on Wida on the 12th rather than wait until on the 13th. As soon as you have completed the acts of pelting on the 12th, after that you can do it whenever you want. बिल्कुल आप 12 को भी कर सकते हैं। So the question that was asked is, after pelting the shaitan, the jamarat on the 12th, once you have completed that act, as soon as you have completed it, you are able and you are allowed, permissible for you to do tawaf.
اس کا میں اردو میں پہلے بتا دوں پھر وہ انگلش میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. میں نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر ہم اپنے ساتھیوں کو مطلب یہ صابر ہیں اور اس طرح کے ساتھی ہیں وہ وہاں پر اپنے وہ سادات والے بینر لے کر کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے لوگ جمع ہوتے جائیں گے ان کو آگے لے کر کوئی انتظام کر کے گاڑی میں اٹھا دیں گے. سمجھ آ گئی؟ وہ گاڑیاں لے کر مینا کی طرف جاتی جائیں گی. اب ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے, گاڑیاں ملنا بھی اس سے مشکل ہوتا ہے, لیکن گاڑی یہ جائیں گے وہاں پر جہاں تک وہ گاڑیاں جہاں سے مل سکتی ہیں وہاں لے کر ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر دنیا ساری میں جانا اور آنا بھی ہے انشاءاللہ. اللہ نے آسان کرنا ہے. آپ بس جب نکلے تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ حج کو آسان بنا دو یا اللہ. ہاں یہ تو اسی لیے قاری صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر گاڑی مل گئی تو گاڑیاں, کیونکہ اس دن پولیس والے قریب آنے بھی نہیں دیتے اور وہ ہیں بھی رائٹ اس میں, کیونکہ انسان پیدل چلنے والے ہوتے ہیں, سارا مکہ ہی چل رہا ہوتا ہے اس دن. سمجھ آ گئی نا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو گاڑی کہاں سے داخل ہوگی. لہذا اس لیے مل جائے تو الحمدللہ, نہ ملے تو پھر لیٹرال مل جائے گی, لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. اس سے تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آسان بنا. جی بیٹا دیکھو کوچ میں میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں آسانی کے لیے لوگوں کی, اور لوگ چلے جائیں مطلب مینا میں ٹائم پر. لیکن چونکہ اعلان کل کر دیا تھا جن لوگوں نے پیدل جانا ہے, سجاد شاہ صاحب ساتھ جائیں گے ان کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو وہ پیدل یہاں سے جائیں گے. ٹھیک ہے, کہاں؟ خیموں میں. کہاں جانا ہے؟ خیموں میں. تو وہ پیدل لے کر جائیں گے. سوری پرسوں صبح, کل رات کو تو بسیں آئیں گی, نہیں پرسوں کو آپ جائیں گے رات کو. آج شام کو پتہ لگے گا نا, جائیں گے تو دیکھیں گے تو پیدل جانا. ہاں وہ حاجی رفیق صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو آج پتہ چل جائے گا کتنے کو صحیح بتایا. نہیں جمرات تک آج تو پتہ چلے گا. جمرات ہیں یعنی آج آپ نے جمرات کو دیکھنا ہے, جانے اور آنے کا رستہ. سمجھ آ گئی؟ خیموں پر نہیں ہے, آج پہلے مار دیے بندے, یعنی اتنا ہی چلو کہ جتنا ضروری ہے ہمارے لیے. وہاں سے جب واپس آئیں گے تو ساری انسانیت ادھر سکھا رہی ہو. ٹھیک ہے. ہاں ایک زبانی آپ کو بات بتا دیں, آپ نے سب دوسروں کو بھی بتانی ہے. جب آپ جمرات سے کنکریاں مار کے نکلیں گے تو ابھی شاہ صاحب نے آج دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک البیک ہے. البیک سمجھتے ہیں؟ لیفٹ سائڈ خاتون حضرات یہ جلدی سے پھر اذان ہو رہی ہے, نماز اذان ہوتی ہے. موبائل بھی یہ خیر لائٹ نہیں. تو عرض یہ ہے کہ جس وقت ہم شارع سنکی یہاں سے جائیں گے, آج رات کو آپ کو رستہ دکھائیں گے. آپ نے مینا سے آنا ہے, کنکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان کو کنکریاں مار کے دونوں طرف سے الیکٹرک سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ سے بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ سے بھی. آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ والی سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہے. کس سائڈ سے؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ والی سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہے, اور پھر سیدھا آپ نے آگے آنا ہے. سامنے البیک, یہ جہاں سے وہ گوشت وغیرہ ملتا ہے نا, وہ البیک کی دکان ہے بالکل. یہ شارع سنکی کے ساتھ, البیک کے ساتھ آپ نے لیفٹ ہو جانا. شارع سنکی پر آ جائیں گے, اس کے اوپر جالی لگی, شارع سنکی کا سائن بھی ہے. وہ سال آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. ابھی آپ کو 10:30 بجے یہ دکھا کے بھی گے, اور پھر اس دن ساتھ بھی ہوں گے. اگر کوئی بندہ آگے پیچھے ہو جائے, بھول جائے, گروپ سے پچھڑ جاتا ہے, تو پھر آپ کو بار 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 اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو. سمجھیے آئی کو سمجھ لیجیے. ہاں تو عرض یہ ہے کہ البیک کے ساتھ آپ نے البیک سے پہلے لیفٹ ٹرن لینا ہے. لیفٹ ٹرن لے کے آپ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں صدات کا چھوٹا وہ بورڈ بھی لگوا دیں گے, اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا.
سوال یہ ہے کہ اگر جس وقت کمپنیاں باندھنے کے لیے آتے ہیں کسی سامان کی ضرورت ہو یہاں سے لینے کے لیے تو یہاں سے لینے آ سکتے ہیں جی آپ آگے لے کے واپس جا سکتے ہیں. دعا تو مانگ جاؤ, دعا مانگ کے جاؤ. یہ میلاد حبیب کبریا بھی ہوتی ہے اور حج کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہماری حاضری کے صدقے ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الہ العالمین ہماری مختصر سی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے حج کو آسان بنا, یا اللہ ہمارے سفر کو آسان بنا, ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے, ہماری حضور سے محبت کو تا قیامت قائم اور دائم کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کا محور کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے ہر قسم کی قدورت کو نفرت کو دور کر دے. حضور کی رحمت کا سایہ عطا فرما امت پر. یا اللہ کریم اپنا فضل فرما, پوری دنیا پر اپنا فضل فرما. میرے پاکستان پیارے پاکستان پر اپنا خاص فضل فرما. مسلمان جہاں بھی آباد ہے, بنگلہ دیش, ہندوستان, جہاں جہاں آباد ہے, کشمیر, فلسطین, یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں پر اپنا فضل فرما. یا اللہ ان پر اپنی رحم فرما, اپنا رحم فرما, اور انہیں دنیا کفر کے ظلم سے محفوظ فرما. اس سرزمین کو جو مدینہ طیبہ, مکہ مکرمہ اور حرمین کی سرزمین ہے, انہیں بھی یہود و حنود کی سازشوں سے محفوظ فرما, کفر کی سازشوں سے محفوظ فرما. حضور کی محبت کا مرکز ہے, مرکز بنا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ 2-3 سوال اور تھے, اردو میں کسی نے لکھے, جلدی جلدی میں جواب دے دوں. پہلا سوال ہے کیا دعا سے ودا حج کے ارکان میں سے آخری رکن ہے؟ یقیناً حج ختم کرنے کے بعد ہی دعا کا ودا ہوتا ہے. دوسرا, اسی کے بعد, ہاں یہ طواف الوداع کے بعد اگر موقع ملے تو طواف کر سکتے ہیں, جو میں پہلے جواب دے چکا ہوں. ایک بار بھی 100 بار طواف کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک رات مزدلفہ میں ہے, ٹوٹل کتنی راتیں مینا میں ہیں؟ یہ جن میں رکنا ہے. تو سنیے, ایک رات تو کل کی ہو جائے گی, ایک پھر آگے جو رات ہے اگلی وہ تو ہمیں راستے میں اور طواف کرتے کرتے گزرنے بھی ہو. ویسے طواف زیارت کر کے وہ بھی رات مینا میں جب پہنچ گئے, سوری پرسوں نہیں, ایک تو کل رات کو جانا ہے نا یہاں سے. آپ 5 راتیں وہاں پر رہنا سنت ہے. اب جو راستے میں گزرتے ہیں آگے پیچھے گزر جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر ٹھہرنا پڑے وہاں پر ہر چیز سے آزاد ہو کے ایزیلی سب جگہ پہنچ جائے تو 5 راتیں ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا سوال نہیں. ہاں پھر بھی اس کے بعد بھی کل رات تک ہم موجود ہیں, فون آپ کے پاس ہے, ہم یہاں پر موجود ہیں, بلڈنگ میں موجود ہیں, کوئی بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.